third day, fourth day, this goes on. And as it goes on, sniff and scurry, वो तो चूहे हैं, because they have simple brains and they are not complicated. They do not analyze so much. What they do is they just come, have cheese and be ready to move on if in case if it is needed. लेकिन hem and haw जो है ना, because they are little people, fictitious fiction है ये, दो little people है, otherwise they think very calculatedly, और उनको लग रहा कि जो है अभी चीज मिल गया है हमको, nothing to worry. Like some of us, when they get a good job and when we get a good business opportunity, we relax, हम अपने comfort zone में आ जाते हैं. So these two little gentlemen, hem and haw, come in the comfort zone, and they start coming late, and they are relaxed now, they have thrown their boots away, and they are not maintaining any schedule, and this continues for some time, and they are so excited, they get their home close to the cheese station, and their life becomes very very comfortable now. Okay, but again, another day, another fine day, the sniff and scurry, when they come, the cheese station is missing the cheese, there is no cheese there. But Sniff and Scurry were not surprised. It was routine for them. They knew that someday the cheese would go. So they quickly run away from that place and they start searching for new cheese. Meanwhile, after some time, because Hem and Haw were late to arrive, their routine has changed. उनका routine बदल चुका था. तो वो लोग जो है आए और they were shocked to see that the cheese is missing from the cheese station. And they started shouting like, it is not fair. मेरा cheese कहाँ गया? Who moved my cheese? Well, from this particular point, the title of the book is taken, Who Moved My Cheese? मेरा चीज यहाँ से कौन लेकर गए. तो ये अब मैं फिर से रिपीट करूंगा कि चीज के माने सिर्फ आप मस्के के मत लीजिए या कोई एक चीज के मत लीजिए. थिंक अबाउट योर जॉब, थिंक अबाउट योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, थिंक अबाउट योर कस्टमर्स, थिंक अबाउट योर हेल्थ, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप्स, think about the happiness and satisfaction you have in your life. So some fine day, what happens when you wake up, you discover that your cheese is lost, your health is not good, or your loved one's health is not good, or there is some problem in the relationship, or maybe you have suffered a big loss in the business, or maybe you have been removed from the job, you're asked to go, or you are demoted. Yeah, these are all the things which happen in our life quite accidentally. जैसा कि हेम एंड हॉक के साथ भी हुआ, they discovered that the cheese is missing from there. और वो बिल्कुल they were frozen, they could not properly understand what has happened. क्या हुआ बोल के समझ में नहीं आया. They got depressed and they started shouting, and because they made all the plans, जैसा हम भी, हमारे को जॉब मिल गया या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो we make our future plans based on the few potential income, फ्यूचर में जो इनकम आने वाली है उसके हिसाब से हम जो है अपना करते हैं. उसी तरह से ये लोग भी कर रहे थे, और इसीलिए उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, जैसा कि हमारे लिए हो जाता है. And Sniff and Scurry, meanwhile, they were out on the maze मेज में घूम रहे थे, और वो अपना हिस्से का चीज जहां से मिला वहां इकट्ठा कर रहे थे. They were very quick to change. Like हम में से कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल जैसे ही उनकी अपॉर्चुनिटी चले गई, they start searching for new opportunities and they get new things in life. They lose job and they find a job within 2 weeks. And there are people who lose job and they do not get a job for 2-3 years. I have examples. जिनको जॉब नहीं मिलता 2-3 साल तक, और ऐसे भी लोग हैं जिनको इमीडिएटली सेकंड वीक थर्ड वीक में जॉब मिल जाता है, और बाहर से आए, जॉब मिल गया जल्दी से. क्यों? बिकॉज दे हैव एक्टेड लाइक स्निफ एंड स्करी, अनलाइक हेम एंड हॉ. तो ये स्टोरी में जब हम सुन रहे हैं, तो हम हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर किसी ना किसी से, ये चारों में से किसी ना किसी से जो है मैच करेगा. आइदर वी आर इन द स्टेट ऑफ हेम और हॉ और स्निफ और स्करी. तो हमें रियलाइज करना है कि हम कहाँ पर हैं. बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक सम एक्शन, हम जो है एक्शन ले सकते हैं. ठीक है. सो दिस हैपेंस, और वो दोनों जो है बिल्कुल वरीड हैं, प्रॉब्लम में हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं. ऑल्दो हॉ ट्राइज टू रीजन विथ हिम, हमको समझाने की कोशिश करता है हॉ कि नाउ दैट इट इज ओवर, लेट अस गो आउट इन द मेज एंड सर्च फॉर न्यू चीज. लेकिन हेम जो है एग्री करने के लिए तैयार नहीं है. वो बोल रहा है कि जो है नो मेरे को, आई वांट टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ द सिनेरियो एंड सी हु हैज टेकन अवर चीज. हमारा चीज कौन लेके गए? वी डिजर्व इट, हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत स्पेशल लोग हैं. वो स्निफ एंड स्करी के साथ हो रहा तो ठीक है, बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड हॉ फेल्स इन कन्विंसिंग हिम, सो ही स्टिल रिमेन्स देयर. एंड दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर, दे डिग द चीज स्टेशन को जो है खोदते हैं, उसके अंदर नया चीज निकालने की कोशिश करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट डिस्कवर द न्यू चीज देयर, क्योंकि चीज चली गई वहां से तो कहाँ मिलेगी फिर. once we lose something, it is very difficult to get it back. We have to get some new thing instead उसकी जगह पे. So ये चलता है इसी तरह से for quite some time. Then Haw realizes one day that he is being
lazy, he's being no not quick in adapting to the change. Ha को realize हो जाता है, and he tells him, let's go out and search for the new cheese. And Ha is sorry, Hem is again angry. Hem is not willing to listen. He says, no, I want my cheese back. Who moved my cheese? ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले वो पुराना मिलने दो, बाद में देखेंगे. So all that he says, but Ha would not listen now. Ha जो है अब डिसाइड कर चुका है कि उसे जो है cheeseless station से, now that cheese station C has become a cheeseless station C now. So he wants to move from the cheeseless station C and search for some new cheese out there. So he writes on the wall and moves on. He writes, if you do not change, अगर आप नहीं तब बदलेंगे तो आप you will become extinct. Extinct यानी कि हम जो है खत्म हो जाएंगे अगर हम नहीं बदलेंगे तो. ठीक है. और वो सोचता है कि why did I not do that before? मैं पहले क्यों नहीं किया, उसको ख्याल आता है. लेकिन then finally he thinks it's better late than never. So he moves on and he writes on the wall, what would you do if you weren't afraid? अब यहाँ पर जो है आप अपने आप से भी सोचिए ये बात को कि आपके बहुत सारे काम जो आप नहीं करे हुए हैं अभी तक, things which are pending, like you wanted to apply for a job, you wanted to apply, start some business, you wanted to do something, you wanted to strengthen your relationship with your parents, or you wanted to strengthen your relationship with your cousins or your spouse, anybody, but you are not taking action. You are not taking action because of some fear inside. A fear like, if you say sorry, they may not accept. If you say sorry, then they may embarrass you, और etc etc. ये जो डर हैं वो हमको जो रोका रखता है हमारे रिलेशनशिप को सुधारने से, और हमें नए कदम जिंदगी में अच्छे कदम उठाने से ये डर हमें रोका रखता है. So आप क्या करेंगे अगर आपका डर नहीं है तो? You have to think about that. What would you do if you weren't afraid? That's what Ha writes on the wall, and he moves on. And when he goes out, he finds that the maze has changed now. Okay, maze अब इस उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था. There are so many changes which has happened in the maze because he has been in the cheeseless station for quite long. So वो जो है बिल्कुल भूल सा गया था. अब जो है क्योंकि नई जगह पर नए तरह से फिर से तलाश कर रहा, he finds it difficult to connect to the maze. Okay, but still he has to move on. He has to move on because he wants to have cheese now. And he also realizes that जैसे ही वो कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छा कदम उठा रहा, लेकिन फिर साथ ही साथ जो है वो पीछे भी हट जा रहा, because he has lost touch with the realities of the maze. जैसा कि अगर आप एक ही जॉब के ऊपर जो है 15 साल कर चुके हैं जॉब, और वहां से आपको मूव करना है, और जब आप मूव करने के लिए नए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो द डिफिकल्टीज विच यू कम अक्रॉस, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको होते हैं. यू हैव न्यू कंपटीशन नाउ, न्यू पीपल, न्यू फ्रेशर्स. आपके जो फ्रेशर्स थे, आपके सामने के जो छोटे बच्चे थे, नाउ दे आर कम्पीटिंग विथ यू एंड दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज देन यू. ऐसा जो है आपको रियलाइज करना होगा जब आप अपने रूटीन से निकलकर नई चीज कोई सर्च करने निकलते हैं तो. So this happens, and उसके बाद जो है उसको ये भी Lukman realize bhai, होता. that Yes. presentation we are not able to see. Have you stopped sharing? Yes, I stopped for a while. I'll just start sharing it when it is not Okay. required. ठीक है. So thank you. Moving ahead, when he starts reflecting, अपने पिछले जो lessons हैं उसको reflect करना शुरू करता है, और he writes on the wall, smell the cheese often so you know when it is getting old. हम जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ठीक है, वेदर इट बी रिलेशनशिप, वेदर इट बी हेल्थ, वेदर इट बी जॉब और बिजनेस, वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सो देन ही रियलाइजेस, अभी उसको रियलाइजेशन हो गया कि जो ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड हैव स्टार्ट ऑब्जर्विंग हिज चीजलेस स्टेशन. वो एक साथ तो नहीं गया होगा ना, चीज अचानक से तो गायब नहीं हुआ. मे बी देयर वर सम हिंट्स देयर, मे बी जॉब में निकालने से पहले आपको कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको जो है आप यू हैव फेल्ड टू नोटिस दैट. और मे बी बिफोर अ बिग फाइट इन द फैमिली देयर वर सम ट्रेसेस ऑफ सर्टेन थिंग्स हैपनिंग हियर एंड देयर, पीपल आर नॉट बीइंग हैप्पी एंड नॉट गोइंग टुगेदर. वो चीजें स्मेल करना जरूरी है. वन हैज टू बी अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट इन ऑर्डर टू टेक सम गुड एक्शंस बिफोर समथिंग बिग हैपेंस इन लाइफ. ठीक है. So then while he was searching in the maze, he discovers a new cheese station. लेकिन वहां पर जाते ही जो है बिल्कुल थोड़ा सा चीज मिलता है उसको, और ही रियलाइजेस दैट ही शुड हैव स्टार्टेड अर्ली. लाइक आपको बाद में लास्ट डे पता चला कि एक जॉब को अप्लाई करना है, और यू अप्लाइड बट द लेटर वेंट लेट, द मेल वेंट लेट, एंड यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड.
So you realize that you should have started earlier. ठीक है, जल्दी शुरू करना था बोल के रियलाइजेशन होता. लेकिन एक बार रियलाइज हो रहा, 2 बार रियलाइज हो रहा, 3 मरतबा रियलाइज हो रहा और हम अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, so there is no point in it. We have to change our behavior. Only then the experiences matter. अब ऐसा एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि जो है हिस्ट्री रिपीट्स टिल यू टेक ए लेसन फ्रॉम इट. जब आप उससे सबक सीख लेंगे तो वो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी. आपके मिस्टेक की जो हिस्ट्री है वो रिपीट नहीं होगी अगर आप उससे सबक सीखेंगे तो. So we'll have to keep learning lessons before we take our actions. And when he was moving in the maze, यहाँ तक हम previous session में जो है टच कर चुके हैं. अब जैसे ही वो मेज में ट्रैवल कर रहा था, he was getting deeper into the labyrinth. He was hitting walls. कहीं पर dead end आ जा रहा, कहीं पर dark जो है हिस्सा आ जा रहा, and कहीं पर तो बिल्कुल सन्नाटा है, there is nothing there. कहीं पर वो रियलाइज कर रहा कि जो है he should have been early, थोड़ा जल्दी आना था. तो ये जो है वो रियलाइज कर रहा है. And he laughs at himself also at the same time. He has learned to laugh at his mistakes. You know, this is a big quality which we need to develop in ourselves. हमें अपने अंदर ये काबिलियत जो है डेवलप करना है. We have to learn to laugh at our mistakes. Those who learn to laugh at their own mistakes, they learn from their mistake and they do not repeat them again, and they do good things in future. तो ये वो उसको realize हो गया, and then he starts laughing at it. And he also realizes that his fears were making worse of him. यानी कि उसके जो डर थे ना कि बाहर कुछ हो जाएगा, बाहर अगर हम मेज में निकलेंगे तो जो है something may befall on me, इस तरह के जो उसके डर थे, वो डर जो है उसको रोके रखे थे. And he laughs on that also. Okay, and moving ahead, he writes on the wall once again. He writes, movement in the new direction may help you find new cheese. और एक भी कहावत है ना, एज यू सो सो एज यू रीप. आप जो बोएंगे वही पाएंगे, और जिस रास्ते पे आप चलते रहेंगे आपको वही मंजिलें मिलेंगी जो मिलती आ रही हैं. And one of the biggest, funniest and foolest thing to do is to keep repeating the same thing and expecting a different result. I hope it makes sense. For example, आप अगर, if I give the same example again, potato, if you sow potato you will get potato, you will not get apples. ठीक है, 1 time, 2 time, 100 times, 1000 times, whether it be your luckiest day, whether you have been very positive about that, where you have very positively done it, whether you have asked everybody to pray for you, whatever you do, you sow a potato and you reap a potato. There is no question of getting an apple. And it is foolest thing and funniest thing to sow a potato and expect the apple to grow. ठीक है. So if you want apple, if you want things to be different, if you want a different result, you should do different things. That is what Ha also realizes here. And we should also learn that movement in the new direction would help you find new cheese. If you move in the same old direction, you are going to get the same old things. Ha starts writing on the wall. वो जो है last session में भी हम देखे थे कि he was writing some interesting things on the wall. And so he continues doing that in the hope that कि अगर वो लिखता आ रहा है इस तरह से, so maybe someday Hem will come out of the cheeseless station C and he will discover what he has written, and maybe he will find out a path also. ठीक है, अपना रास्ता ढूंढेगा. वो आकर ये सोचते हुए जो है वो वॉल पे लिखता जा रहा है, and he is writing also because he is enjoying the moment. Even he is not having cheese, उसको चीज नहीं मिल रहा, but he is enjoying it. सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए ये है, अगर हम अपना जॉब एंजॉय करना शुरू कर दें तो हम जो काम कर रहे हैं, whether it be business or social service, whether it be teaching or practicing something or doing something, the biggest blessing is, अल्लाह ताला की एक सबसे बड़ी नेमत ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें अगर खुशी पाना शुरू कर दें तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. आप इमेजिन करिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं दिन में 8 घंटे से 9 घंटे तक, अगर उसमें आपको तकलीफ हो रही है तो इज इट ए पनिशमेंट और इज इट ए ब्लेसिंग? इट इज सर्टेनली ए पनिशमेंट. ये जो है बहुत बड़ा जो है अजाब है जो रोजाना आता है. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू फाइंड अ जॉब विच यू लव. जो आपको पसंदीदा काम है वो कर लीजिए. हजरत अली का जो है कौल ऐसा मंसूब है कि जो है तुम वो काम करो जिसे चाहते हो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो चाहने लग जाओ जो करते हो. ठीक है, सो यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू. दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू डू इनिशियली, बट एज यू स्टार्ट डूइंग इट you will really find it very beneficial. बहुत मजा आएगा आपको जब आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे. I am in teaching, मैं टीचिंग में हूँ, and I enjoy doing teaching. ठीक है, I am in training, so I enjoy training. मुझे बहुत मजा आता है. So like that, I hope all of you also enjoy the jobs you are in.
So here, Haw, while being in the maze, even if he's not finding the cheese, he's still feeling better. Okay, he's still feeling happy, and he's writing on the wall. He's enjoying every moment, and he's writing on the wall. When you stop being afraid, you feel better. You start feeling better. ठीक है, ये डर डर ही जो है ना, डर डर के जो है हम नाकाम हो जाएंगे, फियर दैट समथिंग रॉन्ग में हैपन, फियर दैट समबडी में से समथिंग, ये जो डर है ये हमको एक्शन लेने से रोका रखता है. ऑल ऑफ यू नो दैट, बट स्टिल डिस्पाइट नोइंग, नोइंग इज नॉट सफिशिएंट, पुटिंग इनटू एक्शन इज इंपॉर्टेंट. हमें जिस चीज का डर है अगर हम वो करना शुरू कर दें तो वी स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद दोस थिंग्स. और एक चीज ये है कि इट इज नॉट एज बैड एज इट कैन बी इमेजिन्ड. ठीक है, अब अगर आप इमेजिन करिए कि आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या नया जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, कोई नया कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप नया कोर्स ले रहे हैं, सो योर इमेजिनेशन विल मेक यू फील दैट इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, बट द रियलिटी माइट नॉट बी सो मच डिफिकल्ट. इन जनरल we feel things are more harmful, more difficult than they actually are. ठीक है, so imagining yourself enjoying new cheese may lead you to it. That's what he writes, and he moves ahead furthermore, and he starts questioning himself why he thought a change would lead to worse. पहले ऐसा क्यों सोचा था? I mean, he is reflecting also, like people those who fail to reflect, जब हम reflect करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं तो हम जो है सीखना बंद कर देते हैं. So every day we have to find out time to reflect upon what we are doing. The unfortunately हम जो अभी जो टाइम हमारा गुजर रहा है, एक तो हम बहुत बिजी हैं, वन. सेकेंडली बहुत मैं only I'm talking about one section of people. Okay, not everybody is busy. There are so many people who are free also. They have so much time to do so many things. But a big section of people are quite busy also. And जो भी टाइम बचा था वो टाइम हम जो है वी आर वेस्टिंग और स्पेंडिंग दैट ऑन अवर मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर, ये लैपटॉप पे या जो है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर जो है हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. लिटरली वी आर नॉट फाइंडिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन. हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा. ठीक है, like maybe when you are driving, when you are riding, or when you are bathing, perhaps you would not use mobile phone. So at that time probably you get some thoughts. ठीक है, typically जो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते. नमाज है, you are not using mobile phone, so you get a lot of thoughts. ठीक है, so it is not recommended, ये recommendation नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसा होता है हमारे साथ. क्यों? क्योंकि हम जो है सोचने के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं. So reflection is very important. We will have to start reflecting if we want to avoid repeating the same mistakes. Why he didn't realize how exciting it is to search for new cheese, वो उसको realization होना शुरू हो गया कि पहले जल्दी निकल जाता मैं तो I would have got better deal. He starts thinking, and he also reaches to a new cheese station, but again the same case, he doesn't find enough cheese over there, but still he enjoys, वो मजा में enjoy कर लेता है, and he moves on. And he once decides for a while to go to cheese station C and speak to him and try to convince him. उसको राजी करके लेकर आ जाएंगे बल्कि ये सोचता है. And he goes to the cheeseless station C again, and he speaks to him and says, come on him, let's go on. कन्विंस करने की कोशिश करता है, जैसा कभी हमारे दोस्त हमको कन्विंस करते हैं कि वी हैव टू मूव ऑन एंड लीव द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, या कभी हम हमारे दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वी शुड नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स. हाउ इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, बट हिम इज एडामेंट. हिम जो है एडामेंट है. ही सेज आई डोंट थिंक आई लाइक द न्यू चीज, मुझे नया चीज पसंद नहीं आएगा. थिंक है वो, थिंक नहीं फ्रेंड्स. आई डोंट थिंक आई वुड लाइक न्यू चीज, ही सेज, and I want my own cheese. I cannot go and start testing new one. I'm not going to change until I get what I want. So him has all reasons why he should not change. Like whenever we are not changing, we also have these so many reasons why we should not change. So him is trying to reason and trying to complain to Ha that he is not moving for some good reason. And well, he returns back disappointed. Ha क्योंकि सुन नहीं रहा है, Ha जो है वहां से रिटर्न हो जाता है, and he writes on the wall while returning, the quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. ये बहुत important है. कभी कभी क्या होता है, हम when we lose job or when we lose an opportunity, we try to dig upon, हम digging पे digging करके वो same job को जो है फिर से लेने की कोशिश,
या सेम लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को फिर से जो है क्रिएट करने की कोशिश में काफी सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड चीज। व्हेन यू रियलाइज दैट द ओल्ड चीज इज गॉन, जब आपका पुराना चीज चला गया बोल के आपको मालूम हो गया, द बेस्ट थिंग इज टू मूव ऑन, आगे बढ़ जाना जो है ये एक सोल्यूशन है, और बहुत जल्दी आप you will discover new cheese if you do so. So Ha realizes it was getting exciting to search for new cheese now. मजा आ रहा है उसको नया चीज सर्च करने में. And he also realizes change could surprise you only if you don't expect it. तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा change को expect करना है कि something may happen, new things may happen. I have to be ready. Every time we have to be prepared for new things to happen in life. Okay, and he also understands or realizes the importance of belief. उसको जो है belief, अपनी जो belief system होती है ना, वो belief system ही हमारे actions को जो है regulate करती है. If we believe in ourselves positively, then we will take positive actions, and if we believe in ourselves negatively, then we take negative actions. ठीक है. So he says, he realizes that when you change what you believe in, you change what you do. आप जब अपने बिलीफ को चेंज करेंगे तो आपके जो है एक्शंस खुद ब खुद जो है चेंज होंगे. एंड ही राइट्स ऑन द वॉल व्हाइल मूविंग अहेड, इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज. अब देखिए वो उसका जो प्रॉब्लम था, हेम का जो प्रॉब्लम था, वो ये बोल रहा था कि जो है देयर इज अ रिस्क आउटसाइड, इफ वी गो आउट वी मे मीट डेंजर थिंग्स, we don't know what is the what are the problems outside, so we should not go out, it's not safe outside. That's what Hem said to Haw. But now Haw realizes it is safer to search in the maze than remain in a cheeseless station. क्योंकि cheeseless station में आप रहेंगे तो the risk is that you may become extinct. ठीक है, there is a risk of losing whatever you have, but it is always good to move ahead. Please give me a 1 minute break. There is some important thing to be done here. Excuse me. All right. So it is safer to be outside and search for new cheese rather than being in a cheeseless station and waiting for the cheese to reappear. Okay. And he also realizes that old beliefs do not lead to new cheese. ये हम already touch कर चुके हैं. And he writes on the wall, going ahead, he writes that noticing small changes will help you adapt to bigger challenges and bigger changes that are to come. जो नई चीज होने वाली है उसको जो है अडेप्ट करने में आसानी होगी अगर आप जो है जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अच्छी सी नजर रखें तो. And what happens, अब ये बहुत पॉजिटिव हो चुका है हॉ, और he was moving around, he was writing everything on the wall, searching for new cheese, moving around, and ultimately he discovers the cheese station N. ठीक है, नया चीज स्टेशन मिल गया उसको, and hooray, he is very happy. And to his surprise, when he gets in, he finds he sees Sniff and Scurry also there, and both of them are already enjoying cheese there. मोटे हो गए, मोटे ताजे हो गए वो, because they have discovered the cheese station in long time back, because they moved the day when the cheese was out. ठीक है, and Haw took a lot of time to move on. So fine, but ultimately he reaches there. कोशिश क्योंकि कर रहा था, so finally he got it. And he is so excited. There is so much of a cheese there. नई चीजें हैं बहुत सारी, excited है वो, और वो पूरा enjoy कर रहा है. And but this time he wants to be careful, so he doesn't throw his boots away. He ties the laces around his neck and he remains there. And looking at him, Sniff and Scurry are also happy that their friend has learned a lesson, and he is not becoming lazy now. He doesn't plan to become lazy now, and he is ready for a change. So the message we can get up to this, यहाँ तक हमें मैसेज ये मिलता है कि हमारी जिंदगी में जब कोई अच्छी चीज हो जाती है, we should not come in comfort zone, but we should always be alert. पहले के दौर में जब किसी को जॉब मिल जाता था तो that was like हो गया, अब इनका मैंने कल्याण हो गया,
बस जन्नत मिल गई इनको, एवरीथिंग इज डन। सो एक जॉब चल रहा, मुसलसल लोगों का चल रहा ही चल रहा, चल रहा, बहुत साल जो है लोग एक जॉब पे गुजारते थे। और टिपिकली पहले गवर्नमेंट सर्विस ज्यादा होती थी प्राइवेट से, अभी प्राइवेट ज्यादा हो गई है, गवर्नमेंट कम है। सो द रिस्क ऑफ लूजिंग ए जॉब इज वेरी हाई, and sometimes companies move you because they want freshers, sometimes companies move you because they cannot afford you, sometimes companies move you because you are no dispensable now, you are of no use, you are old, you are slow, you are lazy। ये रीजंस की वजह से कंपनी हमको निकाल सकती है। तो पहले तो अगर हमें कंपनी नहीं निकाले या हमारा बिजनेस लॉस ना हो तो हमें एक्टिव रहना है। इफ वी आर एक्टिव, देयर इज people would not try for new things, people want to have old thing comfortably rather than exploring new things, so they would not go for new businesses or new people if you are satisfying their needs। एक तो ये चीज करनी है। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से एक्स्ट्रा कंडीशंस की वजह से, जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया, दैट वाज नॉट इन हैंड्स ऑफ एनीबॉडी, सो मेनी गुड परफॉर्मर्स आल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स। तो अब क्या करना है? अब जो है हमें immediately in action में आना है। we'll have to move on if we want to find a cheese for ourselves। So he reflects on what he has learned. There are quite a few lessons which he want to reflect upon and see, and he is realizing that holding on to the illusion of old cheese, पुराना जो चीज था उसी को लेके आप सोच रहे हैं, अगर हमारे एक हैबिट है भी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हमको देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग, हमारे दादा फला थे, हमारे खानदान में दिए हुआ करता था, our forefathers were this and that, people have so much of things to tell about what their forefathers were, but अल्लामा इकबाल says, थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, they were your forefathers but who are you, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं बताइए। हमारे बाप दादा के अच्छे किस्से सुना रहे हैं तो हमारी उसमें क्या जो है स्पेशलिटी है? only that you are a son of the forefathers, those forefathers उनके बेटे हैं। बल्कि in fact अगर हम सिर्फ उनके अच्छे किस्से सुना रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो we are a blot on their character, हम उनकी जो है शख्सियत के ऊपर एक धब्बा है, बिकॉज उन्होंने जो अच्छा काम करके गए हम उसको कैरी तो कर रहे नहीं, हम सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। तो वी आर अनफिट टू बी कॉल्ड एज देयर नो डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो वी शुड नॉट होल्ड ऑन टू द ओल्ड इल्यूजन दैट वी वर दिस वी वर दैट, बट वी हैव टू मूव ऑन एंड सी व्हाट बेस्ट वी आर डूइंग। सो द फ्यूचर जनरेशन, द कमिंग जनरेशन शुड बी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन द प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे फोरफादर्स कुछ अच्छा से कंट्रीब्यूट करके गए हैं तो अगर हम उनसे कम करेंगे तो वी आर फेलियर। वी हैव नो राइट टू टेक द क्रेडिट ऑफ बीइंग देयर चाइल्ड, इट्स बाय एक्सीडेंट दैट वी आर देयर चिल्ड्रन, and even if we reach to their level, there is nothing great we have done because they have given you this opportunity. When they were a child, they were brought up by parents who were not like them, so they came from a humble background, they come from a difficult challenging situation, and they despite that, this person, that is our forefathers, say our father or grandfather, he has come to this level, and now we have this platform, we have this opportunity, and if we reach to his level only, there is nothing great we have achieved. So we are getting a takeoff from this position. I hope I'm making sense. So what I'm trying to say, I'm just repeating that our forefathers came to this level despite having difficulties. Our grandfather and the earlier generations were at very low level, so let us say our father has come to this level, and he has done it by his effort. Now we are claiming to be the son of this great man, and we are reaching only to this level, so we have not achieved anything great. We are getting a takeoff from a higher position. He got a takeoff from a lower position, he could reach here, and when we get a takeoff from here, we should reach to a higher level. Only then we can take credit of being his son. No credit for ourselves to be claim that we are a forefather of somebody, we are grandchildren of somebody, our forefathers were great। ये क्रेडिट ले रहे हैं, अगर कोई लेते हैं हम तो जो है हम सबसे जो है ignorant और वाहियात काम कर रहे हैं। So we have to learn and move ahead this way. Then he started to change as soon as he had learned to laugh at himself. He reflected upon, ये reflect कर रहा है कि जो है क्या क्या हुआ है। He has learned to laugh, so we also should learn to laugh. ये point number 2 आप जो है note कर सकते हैं। We have to learn to laugh on ourselves if we want to grow in life. Then thirdly, we need to be more aware, conscious होना चाहिए। How many of us read newspapers? ठीक है, it's like something, newspaper has become one of the worst thing for people to read.
do in life. And thanks to mobile phone, वो न्यूज़ जो है फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है किसी भी तरह से, व्हाट्सएप के थ्रू या जो है फेसबुक के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू. वर्स, आई मीन यू इंस्टॉल सम ऐप एंड दैट ऐप गिव्स यू सम नोटिफिकेशन, सो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मालूम हो रहा. लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट. वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड बिफोर इट इज टू लेट. बहुत देर हो जाए और पता चला कि जो है वी आर थ्रोन आउट, तो उससे पहले जो है हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम कहाँ पर है और दुनिया कहाँ जा रही है. एंड वी कैन कीप द थिंग्स सिंपल. हम जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट he realizes. And he also learns that one has to be very flexible and very quick to move on. And only when one is very flexible and quick to move on, um, he can change quickly. And that is what we are required to do. And do not overcomplicate matters. कुछ चीजों को simply ही solve करना चाहिए. The more simply we can solve things, the more quickly we can adapt to new change, and the more quickly we can achieve great things. And we provide a better platform for the coming generations. Otherwise, we are doing a big disservice to the coming generations. हमको जो मिला है, अगर हम हमारे आने वाले जनरेशन को उससे कुछ खराब हालत में छोड़ के जा रहे हैं, तो that is one of the biggest disservice we are doing. ठीक है, we are required to deliver more than what we are consuming. Just imagine, थोड़ा सा on the sideline सोच के देखेंगे कि हम कितना कुछ consume कर रहे हैं. We are, let us say, if we are talking about eating, we eat so much, and what we give back to the world, we give our litter. ठीक है, उससे so point is to deliver a service which creates more value for the world. हम economics में किसी भी चीज की वैल्यू को क्वांटिफाई किया जाता, ठीक है, नंबर्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू, नेटवर्थ ऑफ ए पर्सन. आजकल तो एचआर अकाउंटिंग भी हो रही. जो लोग एमएनसीज में हैं उनको मालूम होगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए मेथड ऑफ टैगिंग ए पर्सन विद ए वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू. ये पर्सन की वर्थ कितनी है, ठीक है. तो इंसान की भी आजकल वैल्यू हो गई, उसके काम की वैल्यू है, उसके वक्त की वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, लेट अस से. सो नाउ व्हाट वैल्यू वी आर कंज्यूमिंग. हम जो टाइम खा जा रहे हैं, हम जो हमारे सर्विसेज, हम जो हमारे रिलेशनशिप्स को जो है खा जा रहे हैं, उससे हम डिलीवर क्या कर रहे हैं. व्हाट आर वी डिलीवरिंग, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड बी कॉन्शियस अबाउट दैट. एंड लिटिल चेंजेस नीड टू बी सीन एट. हमें जो कुछ भी हो रहा है, छोटी मोटी चेंज जो हो रही है, उसे जो है रियलाइज करना चाहिए, और क्विकली वी हैव टू अडेप्ट एंड मूव फास्टर. And one more important thing here, how also realize this, that there is always new cheese in the cheese station. जब वो रुक गए थे, चीजलेस स्टेशन में आके फंस गए थे और डर रहे थे कि जो है बाहर खतरा होगा, but this is the big message for him. He approached, he went on searching, and he goes on some cheese stations where there was little left. Finally he discovers a new cheese station. So the learning for him was, there is always cheese present, we need to only start searching. यहाँ पर the biggest message which this book tries to give is move beyond your fear. अपने डर से बाहर निकलना है, ठीक है. चीजलेस स्टेशन में आप फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन में हैं, वहां से निकलना है, तो पहले हमारे डर से निकलना है. This has to be taken with a small precaution, एक छोटे pinch of salt के साथ लेना है. Some fears are to be respected. थोड़े डर जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं, उसे हमें वैल्यू देनी चाहिए, because this is a natural mechanism. The God Almighty has put fear in us. fear हमारे अंदर अल्लाह ताला इसलिए रखा है ताकि हम खतरे से महफूज रहें. अगर हमारे अंदर से डर मुकम्मल तौर पे निकल जाए, तो we will cause a lot of harm to ourselves. हम अपने आप को नुकसान बहुत पहुंचा लेंगे. तो थोड़ा डर जरूरी है, लेकिन डर में जो है हम बैठ नहीं जाना चाहिए. We should start moving on. And as he moves on, he reflects upon all the things which he has learned being in the cheeseless station and searching for it. So ultimately, finally, he writes all the lessons he has learned on the wall once again. Okay, and these are all. The change happens. Change is the only thing which is consistent, which is not going to change. Rest all things are going to change. Okay, I repeat that. Change is something which doesn't change, else everything changes. They keep moving the cheese. They कौन है यहाँ पर? They mean the society. They mean anybody. Maybe your superior in the company, maybe your boss, or maybe your customer, or maybe the market, maybe anybody. They keep moving on the cheese, your favorite cheese, something which is value to you. So we'll have to adapt and move on.
Anticipate change, keep on smelling the cheese to see whether it is rotting, whether it is getting lesser, keep noting that. Get ready for cheese to move and keep monitoring changes, smell it, you know when it is getting old, as we have just now discussed. Adapt to change quickly. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Change, move with the cheese. Like in the last session we have discussed about the 4 types of people. 4 किस्म के लोग होते हैं बोले ना pyramid में. In the bottom of the pyramid, that is the majority of the people who are at the bottom, they are the people who react to things. जब कुछ हो जाता है ना, then we come into reaction mode और हम देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए. And majority of the population lies in this bottom of the pyramid, reactive people. उसके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा. नंबर ऑफ पीपल इन द सेकंड लेवल आर फ्यूअर. ये लोग हैं एक्टिव पीपल. When the change is about to happen, they quickly adapt to it, and they change themselves and they change the circumstances also, and they start working on it. इनसे थोड़े और कम, उनसे ऊपर के लोग जो हैं थर्ड लेवल पे, नीचे से थर्ड, दैट इज प्रोएक्टिव पीपल. These proactive people, they smell the change, they sense the change. कुछ होने वाला है. अब आज से 3 साल के बाद क्या होगा, हालात आज ऐसे हैं तो आज से 5 साल के बाद क्या होगा. If the same thing goes on, अगर यही टेम्पो में हम चल रहे हैं, if the country is going on in the same tempo politically and economically, what is going to happen 5 years from now? And they make preparations, they take precautions, and they ready themselves for anything unto what to happen. So these people are proactive people. And in the pyramid, from the bottom, third level, very few people are in this stage. And above them, who are above them? They are the generative people. These are the people who bring in the change, who do something because of which the society starts reacting. जनरेटिव पीपल. ठीक है, इसमें टिपिकली एक कॉमन सोसाइटी में जो है पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं. ये जो है जनरेटिव पीपल हैं. दे ब्रिंग इन ए चेंज, दे टेल समथिंग and their word has an impact on the society. So we have to move from this bottom of being reactive towards being active, and if we are at active level, we have to move towards proactive level. If we are at proactive level, we have to move on to the generative level. That is the theme of the learning from this particular book. And as Haw was enjoying the searching in the maze, we all also can do that. When we start doing new things, we start enjoying that. Enjoy change, savor the adventure, and enjoy. It's very exciting to be in the maze rather than sticking or getting stuck in the cheeseless station. So be ready to change quickly and enjoy it again and again. This is what he writes on the wall. And as he ponders over, जैसे बैठा है वहां पर, he hears to a sound or some movement out in the maze. The noise grows louder, and he is expecting his friend Hem would be arriving there. Although we don't know, the story ends here. We don't know whether Hem would come to the cheese station end here or not. But that is what Haw is expecting. Like we also expect our dear ones to get all the benefits which we get. ठीक है, हमारी भी ये ख्वाहिश होती है ना, हमारे साथ वालों को वो सब फायदा हो जो हमें हो रहा है. But not everybody would become Haw to search for the new cheese, and many of us will remain Hem. So the story ends here. We'll just go to the chat, and if anybody has any question to ask, they can raise hand or they can comment in the chat box. Okay. Okay, change is the only constant. So no questions asked here. Anybody wants to ask something, tell or comment? We have still 15 minutes left in this session. Hello, sir, this is Sami here. Just a quick question. Sure, please. So how do we know, like, differentiate between when we relate it to terms of like changing the jobs? So how do we see it, like changing it more frequent? It should not become like if I'm feeling something not going good with me, maybe that in terms of learning that may be good, but I'm feeling it out of my comfort zone, or I'm feeling negative about that particular instance or thing, and then I'm switching the job more frequently. So how do we
know that it is for my benefit. Got it. Got it. Only because we have to appreciate change doesn't mean that we have to keep changing all the times. Okay, if everything is fine, we need not move on. In fact, if you think you are in comfort zone, you are getting enough. You said you are learning, but you also feel that you are getting stuck over there and you are becoming more like lazy or being comfort. You can in fact get more time to do things if you are really getting that time to. Okay, and try to be more better in that position or in that company itself. And if you want to achieve something good or bigger, a change is required. ठीक है, वहीं पर आपको वो कुछ मिल रहा है तो इनफैक्ट यू आर चेंजिंग, यू आर बीइंग देयर. ठीक है, ओनली फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग वी शुड नॉट. दैट्स नॉट द लेसन हियर. लाइक चीज स्टेशन सी में वो थे, कब तक थे? जब तक चीज था. अब चीज एन में है, चीज स्टेशन एन में हॉ है, बट ही इज स्मेलिंग द चीज एंड ही इज बीइंग रेडी टू चेंज. I hope I have answered the query. Yeah, thanks. Okay, any other person, any other question? Need not be directly related to change or something like that. उसके अलावा भी अगर कोई question है regarding thinking or action or positiveness, attitude, etc., you can please ask it. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Imran bhai, my issue is I cannot take decisions anything in any field for career. So you take a lot of time to decide, you mean? Yes. So now that you have realized, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है मालूम? जब हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हमारी गलती क्या है, हमारी मिस्टेक क्या है. Knowing the problem is half the solution. So one thing is for sure that you take a lot of time to decide. So when Yes. you know this, you can change it. ठीक है, आप जल्दी से डिसाइड करिए. और अभी आप क्वेश्चन पूछना तो डिसाइड करें है ना. जी जी. डिसीजन मेकिंग की जो साइकोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि अगर हम छोटे डिसीजंस लेने में जल्दी करना शुरू करेंगे तो हम बड़े डिसीजंस जल्दी लेना सीखेंगे. क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो आप अगर 1 रुपया खर्च करने के लिए आपको डिसाइड करना है और 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए डिसाइड करना है, तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो उतना ही है, बस डिसाइड टू डू यस और नो. बाइनरी में सोचिए, 1 और 0. तो 1 रुपया या 1 लाख रुपया उतना ही है. तो इफ यू स्टार्ट डिसाइडिंग क्विकली फॉर स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ, लाइक आप एक काम ये करिए, जस्ट टू नो ट्रेन हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ टू टेक क्विक डिसीजंस. say for example in the morning you are readying yourself for the office, आपको जो है शर्ट पहनना है, कौन सा शर्ट पहनेंगे, think for a while and decide quickly. ठीक है, and be conscious about that. आपको ने देखिए, आप वैसे जिंदगी में you know what you are taking so many decisions in life which you do not realize. आप सबों हजारों डिसीजंस दिन भर में लेते हैं. कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, पानी पिएंगे या नहीं, 4 गिलास सामने रखी, कौन से गिलास उठाएंगे, ये सब डिसीजंस है ना आप ले रहे हैं. सो क्विक डिसीजंस. सो कुछ काम करने के लिए कंफ्यूजन भी बहुत रहता है उस. नहीं, सही है, कंफ्यूजन थोड़ा सा होना जरूरी है. अगर होगा तो ही तो आप सोच सकेंगे कि जो है क्या अच्छा है क्या बुरा. यू विल डू ए नो cost and benefit analysis and you will decide, but getting stuck in that particular confusion is a problem. So my point here is, when you are making small decisions, be conscious of the fact that you are making decisions. ठीक है, and when you realize, जब आपको लग रहा है कि आप बहुत देर कर रहे हैं, तो put an alarm कि मेरे को 1 मिनट में डिसाइड करना है ये बारे में, और 1 मिनट में जहां तक पहुंचे वहां से आपको डिसाइड ही करना है. ठीक है, इट्स ओके इफ यू मेक रॉन्ग मिस्टेक्स, wrong decisions, but that's how we learn, right? You need not make all right decisions. One last thing before we go to some next question, if there is any. देखिए, imagine करिए 2 situations, Mr. A and Mr. B. Mr. A makes 5 decisions in life, in a year average उसके 5 decisions हैं Mr. A के, क्योंकि सोच समझ के decisions ले रहा, उसके जो है 80% decisions right हैं. ठीक है, Mr. A 5 decisions in life, 80% decisions are right. That means 4 decisions are right, 1 is wrong. Mr. B takes 20 decisions in a year and his 50% decisions are right. कौन ज्यादा कामयाब हो सकता है इसमें, A या B? A के जो है 80% करेक्ट हैं, B के 50% ही करेक्ट हैं.
Make a guess, decide quickly and tell me the answer. You're taking too much time. A or B, Abdul Halim? जी Sorry? Okay, I could not hear your response. So typically people may think because he has made 80% right decisions, he is more successful. The answer is no. Research check hui hai. Tony Robbins group has done a research and it says that people like B who make more number of decisions, even if the number of wrong decisions are more, but people like B are more successful. The percentage of right decisions is only 50%, but the numbers, if you look at 10 right decisions, and here you have only 4 right decisions. okay Okay. So make quick decisions. It's okay if you go wrong, but be careful also. Big things require little consideration. Okay. Okay. Anything else? Lukman Bhai Shafi here. Yes. Ji, Walaikum Assalam. Ji, Shafi bhai. Like Sami Bhai said other way around. I'm same company, same organization, working for a quite long time, almost 16 years. Okay. What do you feel like we need to change? Because when I so much stress, so much pressure is there, I feel like I need to change it. I have taken much time to change. So sometimes I feel I'm very comfortable. So what do you say? See, change shall be for good. That is the bottom line. Okay. If you analyze people, those who have reached the highest positions in their companies, they are not the people who have just come. वो accidental बहुत कम होते हैं, consultation basis के ऊपर उनको appoint करके higher position पे जाते हैं. But if you look at it, name a person who has reached to the position of CEO, CFO. They are people those who are in the company for quite good number of years. अभी मेरे को सत्या नाडेला का न्यूज आर्टिकल मैं जब पढ़ा था वो याद आया मेरे को. I think he was in his company for 17 years before he was promoted to that position. So holding on to a cheese or something doesn't mean that you are at wrong side. If you are doing good, it's okay, you can carry on. The most important thing is progression. वहीं पर हम progress हो पा रहे हैं या नहीं. Sometimes change may be fatal also. Everything is going on fine and you are just for the sake of changing, you are trying to change and it may be fatal. It may be very problematic. एग्जाम्पल्स है ना ऐसे, आप भी जानते होंगे लोग जो सिर्फ चेंज किए फॉर स्मॉल प्रॉब्लम से पीपल चेंज, दे गेट इनटू बिग प्रॉब्लम. आसमान से गिरे खजूर बैठ के सुनते हैं ना. So it should not be for the sake of changing, it should be for a better thing. And it's okay to be in a cheese station without moving out if there is enough cheese there. Keep growing. Like you rightly said, if you are getting promotions regularly, our progress is there actually. Yes. No need to think actually. Yes. That Alhamdulillah we are getting. Mashallah. There is any particular there is nothing like in one organization it should be like 15 years, 20 years. After that you need to change. It is nothing like that. It may be risky. It may be risky given the current conditions. It may be risky, and well at the same time things vary case to case basis. एक वन साइज फिट ऑल का जो है फार्मूला इसमें नहीं हो सकता. आपका स्पेसिफिक केस के अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो आपके बारे को जो है कुछ और फैसला सोच सकते हैं. इन जनरल आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उतने ही फ्रेम में, इफ आई हैव टू से समथिंग आई विल से स्टे ऑन. इफ यू आर प्रोग्रेसिंग इन दैट कंपनी इट्स ओके, कैरी ऑन. Okay. जज़ाकल्लाह वय्याकुम. Luqman sir, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. Basit here, sir. How are you? I'm good. Alhamdulillah. Sir, अभी जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे, just the previous question on this, can I add one point, which is a real life situation which happened? Quickly, yes, please. Yeah, so I used to have a teammate who was reporting to me. So a couple of months back, before pandemic started, he came to me and he said, "Sir, I'm planning to move on. I got a better opportunity, better package, everything is fine, and I'm planning to move on." With my set of experience, I tried to explain him that will be a fatal step. That will be a disaster for him because the industry where he was planning is not suggested. Then he tried to convince me saying, no, I'm getting almost double the package and I'm getting a senior position there. Everything was fine. And he saw the rosy picture and went off. Recently, I got a call from him saying, "Sir, I am facing trouble here. Can I come back? Is there any opportunity?" So change, yes, of course, change is always welcome, but not in every scenario.
if you are planning to change, if someone is there who you genuinely think he or she is your well-wisher, if they are suggesting something on this with their own set of experiences, then no, you do have to have a think Value it. about it. Of course, yes. We have to consider that. And Yes. one rider, I'm sorry, I just did not mention, but your example has suggested me this one. Thank you, Basit. That is, greed should not be the reason for going for a change. Okay, only because you're getting more money. Because sometimes what appears is what we do not get. Yes, absolutely. There have to Absolutely. be other considerations. Absolutely. How much you're going to deliver, how much you're going to contribute. These should be the major considerations or factors rather than mere money, because it might be an illusion. Money is one of the most illusory things we have in our regular usage. वो दिखती इतनी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा गायब होती पता भी नहीं चलता, और आती कैसे हैं, जाती कैसे है, people do not realize that. Thank you, Basit. Anybody? Lastly, we have only 3 minutes left now. Sir, Please. I'm sorry, somebody else wanted to speak. I do not have a question. Rather, I would like to probably share from some of my experiences regarding change. What is important in the context of whatever has been spoken so far? I think what is important in today's world is to keep yourself abreast with the latest trends, latest technology that is happening in the industry, whichever industry you may be working in. I would highly recommend people to go ahead and take up online certifications. That will keep you, if even if you're not growing or progressing within the same organization, if you are certified and if you are, able to upgrade your skills, probably that will benefit you in the near future. You may not necessarily have to look for new jobs. Probably your own employer might, That's right. give you more responsibilities or give you more roles, additional roles, which will eventually lead you to grow within the organization. And it will also give you a very good standing in the industry. And tomorrow, if somebody else would like to hire you, you would be the first choice. That's right. Rightly said. And one of the tips that I would like to share for easy reference, what I used to do, when I was trying to look for certifications for myself, I used to go to LinkedIn and look up people's profiles. And I used to look at the specific certifications that they did, and that helped me a lot. That gave me a lot of ideas as to what certifications that I could pick up for myself, which are relevant to my job role. So I think LinkedIn could be a very good source for anybody who is interested to know what certifications they could do, or to get more information on what certifications are available and how they could benefit themselves. Great, good. Thank you for the idea. I hope everybody would benefit by this, inshallah. So I think we are done with the discussion here. Host Sami Bhai, is it okay to exit now? Yes, thank you so much for the time. You're welcome. Jazakallah khair. I wish you all the best, and I wish you all a good change in your life, and also happiness and satisfaction ahead. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you all the participants also for joining. Keep attending our session on Saturday and Sunday.